Hello friends, earlier we have discussed about the mirror formula and the case of the refraction. In refraction, we have studied about the Snell's law. Now, today we are going about the one more case for the refraction, that is total internal reflection. It is a case of total internal reflection, but in the sense of refraction. Initially, means before studying the total internal reflection, we have to study about the its condition, means in which case the total internal reflection is possible. Then for the total internal reflection, two conditions are there. First one, light ray must be entered from denser medium to rarer medium. This is the first condition of total internal reflection. Okay, whenever light ray enter from denser medium to rarer medium, then and then there is a case of total internal reflection. Means if light ray enter from rarer to denser, there will be no possibility of total internal reflection. Second condition, angle of incidence must be greater than critical angle. We will denote the critical angle as a C. Then the second condition for the total internal reflection is angle of incidence must be greater than critical angle. Critical angle क्या है? We will discuss later on. But these two are the essential condition for total internal reflection, जिसमें सबसे पहले चेक करो कि रे कौन से मीडियम से जा रही है. मतलब ray enter from denser to rarer, then and then there is a possibility of total internal reflection. And then after check it, okay, angle of incidence is greater than critical or not. If angle of incidence is less than critical, then there will be no case of total internal reflection. तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं. नाउ फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जस्ट कंसीडर वन वेसल which is filled with the liquid. Just consider as a water. तो ये कुछ भी हमने यहां तक ऐसे समझ लो कि ये वाटर सरफेस है, ये पूरा वाटर से हमने भर दिया. एंड हियर जस्ट कीप द लाइट सोर्स. कोई भी बल्ब मान लो एज ए लाइट सोर्स ए. नाउ फ्रॉम दैट सोर्स द मेनी लाइट रेज आर ओरिजिनेटिंग. कोई भी एक रे अगर हम सोचे एज ए लाइट रे ए बी, तो हियर द लाइट रे एंटर फ्रॉम water to air. If we consider the outer medium of refractive index eta 1 and here the refractive index of the medium is eta 2, then eta 2 is greater than eta 1, and here the light ray enter from denser to rarer.
But the light ray here incident perpendicularly to the surface. Then what about the angle of incident for the AB? Always angle of incident we are measuring with respect to normal. That's why angle of incident is 0. Then angle of refraction also 0. Only the one ray, whenever the light ray incident normally to the surface, this ray will go in the straight line without deviation. तो जितनी भी रेस है उसमें से एक ही रे ऐसी हमें मिलेगी कि whenever the ray is incident the normally to the surface it will not deviated from its path. Now if we consider another ray, ray AB1, suppose it makes angle I, and the now ray enter from denser to rarer, and we know that whenever light ray enter from denser to rarer it bends away from the normal. That's why the refracted ray, and if we consider the angle of refraction as a R, then R is greater than I. Now, just consider another ray which is far from AB1, means AB2, and think about the angle of incident. Suppose say as a I dash. Now compare about I and I dash. So as we took the ray away from the source which is incident on the surface, angle of incident increases. Means here I dash is greater than I. If angle of incident increases, ray enter from denser to rarer, it bends away from the normal. And if we think about the R dash, then R dash is also greater than R, because ray enter from denser to rarer, then it bends away from the normal. As angle of incident increases, angle of refraction also increases. अब अगर ये प्रोसेस हम आगे थोड़ी सोचे, then we can get one ray as a AB3. For that, refracted ray moves parallel to the surface which separates the two medium. Once again, as we took the ray away from the source which is incident on the surface, angle of incident increases. As angle of incident increases, angle of refraction also increases. तो अगर कोई भी रे ऐसे रिफ्रैक्ट होते और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होते हुए ऐसे हो जाए कि वन कंडीशन ऐसी मिलेगी, द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स पैरेलल टू द सरफेस which separates the two medium, means angle of refraction becomes 90 degree. At that time, whatever the angle of incident, we can say critical angle. जो हमने यहाँ पर बोला कि for the total internal reflection, angle of incident must be greater than critical angle. तो पहले critical angle क्या है? तो here we can define the critical angle also. We can say the angle for which angle of refraction becomes 90 degree, it's called critical angle of denser medium with respect to rarer medium. Once again, the definition for the critical angle. The angle of incident for which angle of refraction becomes 90 degree. It's called critical angle of denser medium with respect to rarer medium. Means critical angle remains always in denser medium.
अब अगर हम कोई भी एक रे सोचे AB4, that angle is greater than critical angle, then angle of refraction also greater than 90. तो greater than 90 हो जाए तो यही रे अंदर वापस आएगी, and this condition is called total internal reflection. अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें, हमारी आई साइट ऐसे यहां पर रखेंगे तो हमें ये लाइट सोर्स दिखेगा क्योंकि ये रेज जो है वो बाहर आ रही है. बट इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड देन we will not observe the object even though it is in transparent medium considered as a water में है, फिर भी हमें यहां से ये सोर्स नहीं दिखेगा. सेम सोर्स है, जो भी वेसल है वो सेम है, फिर भी अगर यहां से ऑब्जर्व करें तब रे गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां तक हमें ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, लेकिन यहां से ऑब्जर्व करें तब जो भी ऑब्जेक्ट है मतलब जो सोर्स है वो हमें यहां से नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड whenever angle of incidence greater than critical angle, the ray is total internally reflected in the medium. That's why this surface acts like mirror, क्योंकि मिरर से जो भी रेज है वो टोटली रिफ्लेक्ट होती है. तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ये मिरर बनेगा ऐसा नहीं, बट वी कैन से दिस सरफेस एक्ट्स लाइक मिरर. थ्रू दैट we can say it is total internally reflected. Now in the case of total internal reflection, it's follow the laws of reflection. Means यहाँ पर जितना एंगल होगा whatever the angle, वही एंगल यहाँ पर मिलेगा. In the case of reflection या फिर total internal reflection, it follow the laws of reflection also. अब जैसे हमने बोला कि रे इंसिडेंट हो, एट दैट टाइम देयर इज ए टू केसेस पॉसिबल. सम ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम एंड थोड़ी बहुत रेज जो है ऐसे रिफ्रैक्ट होगी. तुम एक एग्जांपल ले लो कि अगर कोई भी एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर तुम ऐसे टॉर्च ऑन करो, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करो, तब जो लाइट रे है वो हमें अपनी साइड में मिलेगी थोड़ी, जो भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होती है, और बाकी की जो भी ग्लास थ्रू ऐसे रिफ्रैक्ट होगी तो दूसरी साइड भी जाएगी. मीन्स वेन एवर द लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, एट दैट टाइम सम अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑल्सो. इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे. जो भी ये रे है उसको हम बोल सकते हैं पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे. बट एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल एंगल जो भी रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल रे. क्लियर? अब यहां से हमें एक क्रिटिकल एंगल का एक इक्वेशन चाहिए. तब व्हेन वी अप्लाई द स्नेल्स लॉ, तो here critical angle in the medium of eta 2 and 90 degree angle in refractive index eta 1. That's why when we apply the Snell's law, we can say eta 2 sin C is equal to eta 1 sin 90 degree. Now the sin 90 degree is a 1. That's why sin C is equal to eta 1 upon eta 2. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है
sin c is equal to eta 1 upon eta 2, and this total internal reflection is also important, क्योंकि इसके जो भी हम आगे जाकर यूज करेंगे तो उसके यूजेस भी पूछ सकते हैं। द इटसेल्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इससे डिपेंडेंट बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन के sin c इज इक्वल टू eta 1 अपॉन eta 2। Now, if we consider the rarer medium as a air, then for air, eta 1 as a 1 and eta 2 for the denser medium we can say eta. That's why sin c is equal to we can say 1 upon eta. So whenever the rarer medium if we consider as a air, then the equation for the critical angle sin c is equal to 1 upon eta. अब यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि the higher the refractive index, the lower the critical angle, and for the lower the critical angle, the chances of total internal reflection will be more. The one more time, the higher the refractive index means जितना denser medium ज्यादा होगा, the higher the refractive index, these are inversely proportional, the lower the critical angle, and for the lower the critical angle, chances of total internal reflection will be more. कैसे देखो उसका केस, यहाँ पर जो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी थियरी जो है वो खत्म हुई। अब हमने जो बोला कि इन दोनों के रिलेशन है, तब जस्ट कंपेयर वाटर एंड ग्लास। We know the refractive index of water is 4/3, otherwise 1.33. For the glass, just remember the refractive index 1.5. दोनों के लिए अगर हम sin c मतलब 1 upon eta कर दे, then 1 upon eta ये हो जाएगा 3/4। Then 3/4 is equal to 0.75, and if we consider the sin value, मतलब इसको बोलते हैं कि sin inverse 0.75, तब जो भी 0.75 sin के टेबल में देखो तब हमें नियर अबाउट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिलेगी 48.75 degree. Similarly for the glass, अगर हम सोचे कि sin c is equal to 1.5, then sin c is equal to 1 upon 1.5 करोगे तो कुछ मिलेगा 0.6666 something. That's why the critical angle for the glass is near about 41.14 degree. Now, compare the critical angle for the water and glass. Then initially compare refractive index. The refractive index of glass is greater than water. Now, the critical angle for water is 48.75 degree. That means whenever in water the angle is greater than 48.75, near about 49 degree मान लो कि whenever in water the angle of incidence becomes 49, at that time ray gets total internally reflected in water. Now for the glass it is 41.14, means near about 45 degree.
कि whenever या 42 में ही मिल जाएगा हमें तो if we consider the angle of incidence for the glass, अगर ये glass medium मान लो तब whenever angle of incidence is 42 degree, at that time ray gets total internally reflected in the medium of the glass. That's why अगर दोनों में हम parallel experiment करें then in glass we got the total internal reflection at 42 degree and in water we get total internal reflection at 49 degree. That's why higher the refractive index, lower the critical angle, and lower the critical angle, higher chances of total internal reflection. क्योंकि ग्लास में हमें 42 डिग्री पर ही मिल जाता है और वाटर में जब 49 डिग्री होगा तब जाके हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो बिटवीन 42 डिग्री टू 49 डिग्री ग्लास में तो हमें 42 से ही मिलेगा, तो 43, 45, 46 ऐसे सभी एंगल पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा. देन वंस अगेन रिमेंबर द फ्रेंड्स कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर द क्रिटिकल एंगल, and for the lower the critical angle greater chances of total internal reflection. अब इसी इक्वेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन हमें लेनी है कि अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सॉल्विंग MCQ. Here we can say sin C means critical angle is inversely proportional to the eta means denser. जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि sin C is eta 1 upon eta 2, then eta 1 is always rarer medium and eta 2 is always denser medium. तब critical angle is inversely proportional to the eta. Earlier in Snell's law we have discussed about the absolute refractive index. But eta is equal to C upon V means eta is inversely proportional to the speed because this is the speed of light in vacuum. वो तो constant है, medium में change होगी. That's why eta is inversely proportional to the velocity of the light in medium. That's why here eta and V are inversely proportional. That's why we can say sin C is proportional to the velocity. Now V is equal to nu lambda. Nu, we know that frequency of the light and lambda is wavelength. Then frequency, whenever light ray enter from one medium to another medium, the frequency of the light does not change. That also remember, already we have discussed कि frequency कभी भी change नहीं होगी whenever light ray enter from one medium to another medium, कोई भी medium में से जाए, the frequency remains constant. That's why we can say sin C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा. तो अब जो भी वेवलेंथ है, तो जितने भी हम अगर ऐसे हमारा स्पेक्ट्रम सोचे विबग्योर, सभी की वेवलेंथ, सभी कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, तो सभी का हमें क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट मिलेगा. और जिसकी वेवलेंथ हाई उसका क्रिटिकल एंगल भी हाई, जिसकी वेवलेंथ लो उसका क्रिटिकल एंगल भी लो मिलेगा हमें. वंस अगेन कि sin C is inversely proportional to the refractive index means denser medium. For the refractive index it is C upon V. That's why eta and V are inversely proportional to each other. तो अगर ये 1 अपॉन में है तो ये मिलेगा हमें डायरेक्ट में, मतलब स्पीड एंड क्रिटिकल एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. V न्यू लैम्बडा,
frequency remains constant. That's why it is directly proportional to the wavelength. That's why sin c proportional to the wavelength. तो अगर यहां से ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि कौन से कलर के लिए क्रिटिकल एंगल हाई होगा और कौन सा कलर का क्रिटिकल एंगल लो है, देन थिंक अबाउट द वेवलेंथ ओनली. विच कलर हैज हायर वेवलेंथ एंड लोअर वेवलेंथ. तो अगर हम विबग्योर में सोचे तब द रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम एंड वायलेट कलर की मिनिमम है. तब ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल फॉर द रेड कलर इज मैक्सिमम एंड क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर इज मिनिमम. हियर वी कैन से फॉर द क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द वायलेट कलर. अब इसके बिटवीन ऐसे कोई भी रे तुम्हें पूछ ले तब जस्ट फॉलो द स्पेक्ट्रम एज ए विबग्योर, जिसमें ऐसे वायलेट से रेड तक जाए हम तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है. तो वायलेट की लोवेस्ट, रेड कलर की मैक्सिमम, एंड विबग्योर से सोचो तो ऐसे उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है. तो बोल सकते हैं हम क्रिटिकल एंगल फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द वायलेट कलर. अब इसी का हमें यूज भी करना है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन.